कैप्टन वाले शो टास्क में उसको पहले मना कर रहे थे एंड जब उसने आउट परफॉर्म करा सबको फर्स्ट टास्क में, सेकंड टाइम शी बिकेम द कैप्टन. सो आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रूव इट टू एवरीवन दैट फाइट का टास्क या कुछ वैसा हो जाए तो थोड़ा वन ऑन वन. Definitely, we feel that can be a good competition, and they usually have a good, arguments also. But उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो मोबिलिटी एंड जो स्टर्डी बॉडी है, आई थिंक आउट ऑफ. आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं और टेलीचक्कर में आपको बता दें कि आज अंजलि रावत की खास फैमिली के कुछ सदस्य आए हैं जिनका नाम है स्वाति, जो उनकी दीदी है, और उनके जीजू कुशब भी आए हमारे साथ. सो प्लीज वेलकम टू टेलीचक्कर. थैंक यू सो मच. अंजलि बहुत धाकड़ गर्ल तो है ही वो, उत्तराखंड की, और अब वो बैटल ग्राउंड में भी अपना मतलब ताबड़तोड़ सबको करारा जवाब भी दे रही है अपने टैलेंट से. तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? So definitely, I'm very proud of her. The way she is actually playing with so much of courage and strength. So बहुत अच्छा लग रहा है देख के. And she has always been like this. हमेशा consistent रही है and हमेशा एक athlete रही है. So it's beautiful to see her. आपको जजेस में आपका फेवरेट जज कौन है? आसिम की टीम में तो वो है ही. वो आसिम की टीम में इवन आई लाइक रुबीना, बिकॉज वो भी बहुत बायसनेस उनके अंदर कुछ भी नहीं है, एंड शी इज ऑलवेज बीन वेरी न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स. इनफैक्ट उन्होंने अंजलि को भी सपोर्ट किया है हमेशा. सो आई लाइक रुबीना ऑल्सो. रुबीना और आसिम का भी बीच में खबर भी आई थी और वो क्लिप्स भी बहुत वायरल हो रहा है. तो रुबीना ने साइड भी लिया था कि आप एज ए मेंटोर है मोटिवेट करो, तो उन्होंने बोला था कि मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ ऐसा. तो उस चीज पर आपका क्या टेक है कि वो सही था जिस तरीके से वो बोल रहे थे? सी आई थिंक उनका रिएक्शन वही लाइक आई सेड बहुत स्पॉन्टेनियस आता है. सो ऐसा नहीं है कि ही वांट्स टू डिमीन एनीवन और एनीथिंग. बहुत नेचुरल रिएक्शन है और आई थिंक वो बिकॉज यू सपोर्टिंग अ सेट ऑफ कंटेस्टेंट्स, वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, रुबीना अलग कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं, तो बहुत न्यूट्रल रिएक्शन और बहुत अनबायस्ड रिएक्शंस आए थे दोनों की तरफ से. दैट्स व्हाट आई फील. वो थोड़ा टिप होता ही है व्हेन यू आर कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर. आपका क्या टेक है? Like Rubina is one of my favorite, not from this show but पहले से ही, and I really felt really good when she also supported Anjali. Whenever there's these kind of shows and they have certain teams, so definitely वो अपने team player को support करेंगे. सबका एक individual way होता है. Definitely Rubina has her own way and Asim also, but in the end they are supporting their team members and that was more evident over there. आपको क्या लगता है, क्योंकि शो में ना बहुत डर्टी गेम्स भी होते हैं, तो कैसे एडवाइस क्या देना चाहोगे आप अंजलि को अगर आपको मौका मिलता है तो? So of course I don't want to give her any advice because she's playing really well. मतलब आप देखो वो किसी भी controversy में नहीं है. She doesn't know how to make these gameplays also. So which is very evident in show. She is focusing on her individual game and I think she's performing very good. So कुछ advice नहीं देनी. She's doing fabulous. अच्छा. जीजू और सालिका भी बॉन्ड हुए तो आप क्या advice? I think keep playing the way you're doing. You're doing fabulous and I think this is the way people will also know कि आपका nature और आप how you are as a person. So I think this is the way I think you'll end up winning the show also, because बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो controversies और थोड़ा politics में घुस रहे हैं, and she's very clear and clear headed कि मुझे कैसे खेलना है and how I want to perform. And see कोई उससे कुछ आके पूछता भी है तो she's very blunt and on the face कि मुझे यही करना है. So her reaction and her gameplay is very systematic and very on to the point. So we really liked when she took stand for herself, when she said नहीं मैं killing zone में नहीं जाऊंगी, either you make me the captain. So she knows how to put and when to put her point. Correct. And which she is doing, and other than that I believe she's doing great. मतलब there's nothing to complain about. Exactly like captain वाले शो टास्क में उसको पहले मना कर रहे थे and जब उसने आउट परफॉर्म करा सबको फर्स्ट टास्क में, सेकंड टाइम she became the captain. So I think that's how you prove it to everyone that you are right and you're doing going in the right direction. अगर मैं
पूछूं, अंजलि आसिम के टीम में नहीं होती, तो अगर आपको एक मौका मिलता कि कौन से जजेस के पास जाना है, तो आप उसको कौन से जजेस की टीम में भेजते? That's what we said earlier, Rubina, because she has beauty and she has brains also, so she's utilizing both of them very well. And सबकी अलग strengths है, सबकी अलग tactics हैं, because they've been grown up in a very different manner, all the judges. But I think Rubina is one where we feel कि उस टीम में जानी चाहिए थी, अगर if not Asim. But Asim is again very strong. He's very strong-headed, very clear in his head. So वो भी बहुत focus करता है towards the contestants and to make them grow and win the task. आप रुबीना? Of course, Rubina, but Asim is equally good. Like the way he get into the task and वो मतलब एकदम से उसमें घुस जाता है, तो दिखता है that he wants the contestant to win, he wants his team to win. So definitely, I feel she's in the right team. जब ये ऑडिशंस के लिए आप लोग अंजलि के पास है, तो क्या प्रोसेस रहा, क्या कैसी जर्नी रही थी प्रोसेस की, कि कैसे उसने ऑडिशंस दिया, कब आपके पास ये शो के लिए अप्रोच किया गया उसे? So in Delhi she had couple of auditions which she has done it. उसके बाद फिर उसका बॉम्बे में भी ऑडिशन हुआ था during होली के टाइम पे. So of course we got to know that when she is coming to Mumbai. फिर मुंबई में भी उसके कुछ rounds हुए, and then the round which was shown on the TV, that was the main final round which she of course won, and then she came in the Battleground show. So it's not like just one audition, there were multiple auditions which has happened. I see 80-100 people here, मतलब you know the last lot में, and then out of which 20 people got selected, so which is again commendable, I can say, like all the Correct. 20 people who are there. Especially if you are competing with gold medalists and people who are national athletes, yeah, for sure. तो फर्स्ट वर्ड क्या था जब सिलेक्शन हो गया? तो I was like, wow. I was like, please come to my home in Mumbai. But of course, she was in the show. But I was really happy. I was like, that's like amazing, because of course, she wanted that direction and she got that platform. And we are very happy. And it's just the beginning. We feel that, you know, the things are going to go much ahead after this. कितना मिस कर रहे हो उसे आप लोग? See, I wanted to meet her, but unfortunately allowed nahi hai. Being in the same city, I'm not able to, and I'm not seen her for last 2 years also. So for me, I really wanted to meet her, but then of course we cannot. But then yes, once she wins, we will definitely meet. आप कितना मिस कर रहे हो? मैं एक साल पहले when I went to Delhi, that's when I met her. But Swati hasn't met her for a really long time. So obviously we were really keen to meet her in between जब वो auditions के लिए आई थी, but unfortunately उसको direct flight लेके direct Delhi भेज दिया. So eventually once she comes back, we'll meet her and we're really excited to see her. कृष्ण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कौन सा कंटेस्टेंट उसके लिए थोड़ा कॉम्पिटिटर है या फिर खतरा बन सकता है? See, honestly, अगर if it's a girl to girl task, I don't think बहुत ज़्यादा उसको difficulty होगी till time you're probably going for a task which is either like a fight का task या कुछ वैसा हो जाए तो थोड़ा one on one difficult हो सकता है. Otherwise, with the guys, I think थोड़ा the guy who's in the team, what's his name? Shiva. I think Shiva has a very good strength and वो थोड़ा competitiveness दोनों में रहती है. That's what I see in both of them. But I think apart from that, not much. See, as I mentioned that, as Kushav said, कि जब one-on-one अगर कुछ body weight वाला कुछ हो, तो then there's something which we can say maybe a competition. However, as all players are equally doing great. Shiva definitely he puts a lot of brains into the game, which we can see. So they are in the same team. So of course, there's one person is going to win the show. So definitely we feel that can be a good competition, and they usually have a good arguments also. That but then we like it that individually दोनों अपने आप को represent कर रहे हैं, दोनों जीतना चाहते हैं. So correct. जब आप लोग स्क्रोल करते हो या फिर नॉर्मल आप शोज देखते हो, तो फिर कभी हो सकता है यार इसको ऐसे करना चाहिए था, यार यहाँ पे पैर रख लेती तो ऐसा हो जाता, कभी ऐसा होता है? अभी तक तो जितने टास्क किए, आई थिंक शी आउट परफॉर्म्ड एवरीवन, दैट्स व्हाट आई सेड. क्योंकि आपने अगर देखा भी होगा तो अभी तक वो सोलो टास्क कोई भी ऐसा है नहीं कि जो शी इज लॉस्ट. ग्रुप टास्क में इट्स नॉट
up to you only. There are 3-4 different people who are handling the task. So एक की mistake. खुशबू, आप जीजू हैं तो आपने कुछ एडवाइस या फिर कैसा है उनका आपके साथ बॉन्ड? See, I'll tell you. उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो मोबिलिटी एंड जो स्टर्डी बॉडी है, आई थिंक आउट ऑफ यू सी अबाउट 15-20 कंटेस्टेंट्स, उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा पावर, एथलेटिक बॉडी है उसकी. इसलिए आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई फील इन द लॉट, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्पीट अगेंस्ट हर बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है दैट नो वन इज एबल टू मैच अप टू हर लेवल. इवन इन द फर्स्ट वीक दैट यू सॉ, शी वॉज द टॉप कंटेंडर and she got really appreciated really well from the contestants. So my bond with her is very sweet because she's like the age gap is a lot, but again very hard working, and we've seen her grow in these years, and she's been very building herself really well, I feel. अंजलि, उत्तराखंड से मुंबई में जगह बनाना काफी स्ट्रगल होता है, तो वो जर्नी उसकी कैसी रही? क्या स्ट्रगल उसने फेस करे और वो कैसे उस स्ट्रगल से बाहर आई? डेफिनेटली स्ट्रगल तो रहता ही है एज एन एथलीट. सो ऑफ कोर्स स्टडीज़ का प्रेशर भी रहता है बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म देयर ऑल्सो, यू हैव टू परफॉर्म इन योर स्पोर्ट्स ऑल्सो. सो सिंस चाइल्डहुड शी इज़ इन टू स्पोर्ट्स, वेरियस स्पोर्ट्स आई कैन से. वो टीटी में थी, देन रनिंग में थी, देन बॉक्सिंग, उसने नेशनल रिप्रेजेंट किया है, स्टेट रिप्रेजेंट किया है. एंड मुंबई हमने कभी सोचा नहीं था दैट शी विल कम ओवर हियर. दैट वाज हर डिसीजन एंड हर हार्ड वर्क व्हिच गॉट हर हियर. लोगों का ये भी कहना है कि लड़की स्पोर्ट्स फील्ड में जाए तो एक थोड़ा सा रहता है, कमेंट्स रहते हैं रिश्तेदारों के और फ्रेंड्स के, तो अब उनका माइंडसेट कैसा चेंज है? बिकॉज अब वो ऑन एयर हो रही है, तो कितना माइंडसेट उनका चेंज हुआ है, बिहेवियर आपके? डेफिनेटली देयर वाज अ टाइम लाइक पीपल यूज्ड टू से कि पढ़ाई नहीं कर रही है, स्पोर्ट्स कर रही है, क्या करेगी आगे. सो बट थैंकफुली माय मदर वाज ऑलवेज बीन सपोर्टिव एंड टू एन एक्सटेंड. मतलब पापा भी बोलते थे कि नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, बट मम्मा वाज लाइक कि जो उसको अच्छा लग रहा है आप उसमें सपोर्ट करो. एंड नाउ वी कैन सी लाइक काफ़ी रिश्तेदार भी हमें कंग्रेचुलेट कर रहे हैं. दे हैव मेड अ ग्रुप जिसमें एवरीबडी इज प्रेजिंग हर. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू सी हर, यू नो, ऑल द रिलेटिव्स ऑल्सो appreciating that her hard work. And definitely लड़कियों को जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, and we have always been in favor of that, me and my mom. So yes, definitely. फर्स्ट ऑडिशन का क्या रिएक्शन है जब उसने न्यूज बताई कि यार मैं इसके लिए ऑडिशन दे रही हूँ रियलिटी शो के लिए? सो फर्स्टली मुझे नहीं पता था. वो जब उसका बॉम्बे आने का हुआ तो देन शी टोल्ड मी दैट आई हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस शो, एंड आई वाज लाइक रियली, आई वाज सुपर हैप्पी बिकॉज उसके एग्जाम्स चालू होने वाले थे. बट लाइक यू नो फॉर्चुनेटली शी गॉट दैट शो एंड वी वर वेरी हैप्पी, वी वर वेरी एक्साइटेड. आई जस्ट टोल्ड हर दैट यू आर द बेस्ट, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव डन रनिंग, you have done TT, you have done boxing, so you have all those things which is required, so give your best, and that's what she is doing over there. श्वेता ने भी उनको प्रेज किया था. अंकुर के साथ उनका एक टास्क था, तो जब उनको इतना प्राउड फील होता है तब आपका क्या रिएक्शन था? बिकॉज सब लोग, आसिम भी उनको मोटिवेट कर रहे थे, बट शेखर धवन ने बोला था गुड जॉब और बहुत मोटिवेट किया था. Yes, so of course initially हमें भी लगा था because there are people with a good build, because सब MMA फाइटर हैं या अपने अपने एक इंडिविजुअल फील्ड से आए थे. We were little scared as a sister कि कहीं उसको चोट ना लग जाए when you see her on television. But when Shikhar Dhawan and when she performed really well and Shikhar Dhawan praised her, we felt really happy. Of course हम बार बार वो clip cut करके देख रहे थे. I think she outperformed everyone in the show. एंड जो शिखर धवन वाले में एपिसोड में भी जो टास्क किए थे, ही ऑल्सो सॉ द स्ट्रेंथ इन हर, दैट्स हाउ एवरीवन रियलाइज दैट वो दिखने में छोटी है बट द पावर एंड द मोबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ दैट शी हैज इज अमेजिंग. और उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है फील आउट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स. छोटा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, करेक्ट. सो आप जीजू हैं तो आपके फ्रेंड्स कभी उनको बोलते हैं यार कि हाँ she is doing very well, या फिर क्या रिएक्शन? हाँ, इनफैक्ट एवरीवेयर एट माई वर्क प्लेस एंड एवरीवेयर in my relatives, family, mom, dad, सब बहुत ज़्यादा प्रेज करें. we've been watching the episodes everywhere, we've been sharing her stories, and जो post आ रहे हैं सब we've been posting it everywhere. So she's doing really really well, I feel, and वो she has all the power and everything to win the show. I feel कि she's a top contender to win the show, I feel.
स्वाति, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डू यू फील जिस तरीके से फाइट हम सबको दिखाते हैं तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि स्क्रिप्टेड शो होता है, रियलिटी शो, तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट, कितना रियल है? I feel it's real because I can see, मैं बिल्कुल पॉज करके उसके ब्रूजेस वगैरह देखती हूँ. So definitely वो शो रियल है, मतलब रियल एथलीट्स उसमें हैं जिनकी रियल फाइट दिखाई है. And of course it's real. Scripted, I don't know whether it is not, but I feel it's more of a reality show which is real. और रजत और आसिम जिस तरीके से फाइट करते हैं और वो जजेस भी हैं, तो जिस तरीके से ऑन स्क्रीन उनका एग्रेशन दिखता है वो सही है? मतलब रियल में भी वो वैसे ही हैं? See, real we don't know them, so of course I cannot comment on that. But then I feel that जो भी वो शो में कर रहे हैं, that is to motivate their own team members, and definitely sometimes वो निकल जाता है for their own. Correct. team. I think they're very instantaneous and very spontaneous in terms of whatever they do. तो ऐसा नहीं है कि कोई प्लान्ड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंस्टेंट व्हाटएवर रिएक्शंस दे गिविंग टू द. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से मतलब वहाँ पे पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स अभी टीम मेंबर्स हैं तो होता है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उस पॉलिटिक्स से बाहर वो निकल जाए और उसे क्या करना चाहिए? सी ऑनेस्टली अंजलि इज, मतलब वो इतनी ज्यादा घुसती ही नहीं है उन मैटर्स में कि उसको उस ट्रिकीनेस में घुसना पड़े और इतनी पॉलिटिक्स के अंदर रहना पड़े. वो क्लियर है, उसको टास्क मिला, शी इज परफॉर्मिंग इट रियली वेल टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, एंड आई एम श्योर कि वो 90% ऑफ द टाइम शी विल कीप विनिंग. अगर वो सोलो टास्क है तो देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू विन अगेंस्ट हर. अगर वो ग्रुप टास्क है, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू समवन एल्सेस probably mistake, if they're losing out on that, then that's a different thing. But otherwise वो इतना politics और इन सब में she's never involved much. वो बहुत clear है and her vision is also clear and she's not making much strategies also. Honestly, she's just focusing कि मुझे game जीतना है and I have to perform really well because the name is Battleground and you're performing in a battle, so you have to perform in every task. That's what she's doing. स्कूल में कैसा था, झगड़ा होता था अंजलि का, कैसे वो डील करती थी, फिर घर पे कैसे आती थी, कंप्लेन लेकर आती थी या सॉर्ट आउट कर देती थी? नहीं, सॉर्ट आउट करके आती थी. हमें बाद में पता चलता था कि ऐसा झगड़ा हुआ है, किसी से के साथ फाइट हुई है. ऑफ कोर्स वी यूज्ड टू गेट टू नो, बट नहीं, उसके मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि वो घर पे आए एंड शी हैज कंप्लेन्ड अबाउट इट. इनफैक्ट हमारी भी आपस में कभी होती थी, आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड बिकॉज शी हैज बीन लाइक दैट विद अस. सो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि शी हैज कंप्लेन्ड about anything. She has always been a fighter and which is in the show also has been proved that. You want to share something, कुछ चाइल्ड का उसका कि कुछ हुआ है ऐसा? As such, I'll say that her journey has been very hardworking and struggling, which we all have seen because पौड़ी एक जगह है जहाँ पर हम रहते थे, so वहाँ पर you don't get so much of facility. Of course, she had a coach, but then उस level की आपको training नहीं मिलती है जिस level की उसने अपने आप में वो consistency रखी. Then she herself planned to come to Delhi to work on her skills. उसने खुद से सब कुछ किया. It's just of course we were there to support, but direction उसने खुद बनाई. Very कंसिस्टेंट, मतलब 5 बजे सुबह उठ के जाती थी, चाहे बारिश हो, ठंडा हो, कुछ भी हो. एंड माउंटेन्स में इट्स ऑलवेज बीन वेरी कोल्ड, सो वो जाती थी. उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन था जो आई फील हम लोगों में नहीं था. ऑफ कोर्स दैट्स द रीजन शी इज ओवर देयर. हमने कभी सोचा भी नहीं था, टीवी वी नेवर थॉट ऑफ दैट शी विल बी कमिंग टू अ शो, एंड इट फील्स रियली गुड एंड प्राउड टू सी हर. And of course, after my brother's incident, she was very close to him. She was the one who felt the most, like, of course we all felt the same way, but they were always together because of the same almost similar age group. So उसको वो थोड़ा सा एक touch back moment we can say that उसकी life में आया था, जिससे उसको और motivation बोलो या फिर she felt that need that she is the son of the family. So that's how she has started representing herself. जैसे आप बोल रहे हो, फिजिकल के साथ मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कैसे उस टाइम पे वो कॉप अप करके बाहर आई? Of course, it took time, like instantly नहीं होता, because of course it was a big thing for the entire family. Like she did not speak about it, we did not speak in the family, and इतना हमने बात नहीं करी, but we could see in her game, in her performance that she is struggling.
she is actually showing that in her performance. She was keeping herself all the time busy. So वो मतलब अपने practice के लिए जाती थी, घर आती थी, फिर gym जाती थी, फिर practice के लिए जाती थी. So she kept herself occupied, and of course there was some pain that was keeping her busy. So yes, difficult for her to come out of it, but then of course eventually time makes you grow, right? So yes. और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने बताया होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे रियलिटी शो मिला है, तो उनका कैसा रिएक्शन था? आप तो सिस्टर हो तो समझ सकते हो, बट फैमिली, क्योंकि उनके भी थॉट्स प्रोसेस होंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो आप लोग उन सब चीजों को कैसे डील करते हैं? See, as I mentioned, my mom has always been supportive. She was very happy. In fact, मुझे last में पता चला, but then my mom, my sister, another sister, she got to know, and they were very happy about it. But of course, we were also scared because you are representing yourself on a television where there's like thousands of people who are going to watch. Some people can like you, some people can hate you. But the way you represent, of course, your individuality comes across that way. So we were scared in that way. We were scared कहीं इसको चोट ना लगे, because as an athlete आपको काफी लगती है, and which people don't see that. That also we were little scared, but then we were very happy, and we were all praying that she wins the show, because there was a constant support, I can say, from the family. It was not like Correct. Nobody said that why you're going, nothing was said. And because everyone has seen her hard work and the way she's been into sports, into boxing from the last 2-3 years, मतलब cramps आ गए, ये आ गया, next day फिर जाना है. So they also know कि इसकी motivation और dedication towards this. So this was again a really good show to get into. अंजलि का इमोशनल ब्रेकडाउन भी लाइफ है, होता है, तो कुछ ऐसा एडवाइस या फिर आपने उससे सीखा, यार इसने तो ये कर लिया, तो वो चीज एक मुझे भी, मेरे अंदर भी होनी चाहिए थी? See, I feel consistency is something which I want in my life, because उस type का dedication and passion is one thing, but then how you consistently do that in every day's time, वो एक require, मतलब I feel I should also have that. वो चीज़ एक मैं उससे learn करती हूँ. Of course, she is just growing, and there's a lot to learn in her life, so we want her to learn that way also. But other than that, we all been learning from her. She's like, as I mentioned, she's a chota dhamaka, chota pataka, what we can say. So everybody learns from her, her dedication, her hard work. Even she's very emotional, which is not even seen, but she's very emotional, which she balances out with. Sometimes, as an individual, it's difficult when you're representing yourself in the show, but she's doing well in the show, and I think that's what is required. अंजलि के फैन फॉलोइंग बन गई है, क्योंकि फैन फॉलोइंग एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है सोशल मीडिया में, और एज सच भी अब उसको रिकॉग्नाइज करने लगे हैं वो फैन फॉलोइंग. तो जब वो सोशल मीडिया पेजेस पे आप जब देखते हो, तो व्हाट यू हैव टू से? So we feel really good and really happy कि finally, because वो इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए एफर्ट कर रही है और पूरा एनर्जी लगा रही है, वो finally it's coming to the right path. And I think this is just a start, and she's way ahead. She has to go way ahead in life. और कोई सीक्रेट टैलेंट, बॉक्सिंग तो वो करती है, एथलीट तो वो है ही, और कोई सीक्रेट टैलेंट जो फैंस को पता होना चाहिए कि अंजलि ये भी करती है? She table tennis, she plays Sports. Apart from sports, she's very funny. जिसका वो side आया नहीं है, but because she's like not interacting that much, but she's funny as a kid. मतलब I've seen her that part also. तो उसका फन साइड है, वेरी हाउ आई कैन से चुलबुली टाइप है वो. मतलब once she will sit with you, you'll make sure that you'll laugh. And उसका एक, since she's always been to sports, उसका एक accent है जो बहुत funny लगता है. So वो चीज़ we wanted to see more, but of course there she is right now. She's just in her shell. So of course धीरे धीरे वो open होगी, but then again that's something I can say which we have seen now. Correct. So you might end up losing it. So abhi tak, touch wood, things are really good. That's why she's performing well. So I feel there's no question about that. So अभी बीच में खबर आई थी कि अभिषेक मैनन को ना लग भी गई है, तो ये था कि रिप्लेस हो सकते हैं एल्विश से या फिर लकेश कटारिया से. तो व्हाट यू हैव टू से लकेश? आई थिंक वो एपिसोड हमने देखा है, उसके बाद तो ही डिड नॉट गेट रिप्लेस. वो ऐसी फेक रूमर था. लवकेश केम एज एन एंकर इन द शो,
So kuch nahi hai, things are good. He's still in the show. Yes, Abhishek is a good host. Like he is a good, mentor. So we have seen him motivating his team. So we definitely wanted him to be there. And Lavkesh is again, he is good in his own genre. So yes. वो humor and वो show को funny बनाने में he has that good take. So he's good, yeah. ओके, तो अंजलि के फैंस को आप जाते जाते क्या कहना चाहोगे? So we'll say that just keep loving her the way you are doing, keep supporting her, and do vote. I, will request all my people from Uttarakhand, even from Delhi, because she has represented both the states. So just to support her and vote for her, and that's what we all need right now. Exactly. Just keep supporting her, keep voting her every day, because every day you have an option to vote. Go and vote her every day, and everywhere, because you get to know the person's nature eventually, so you know कि वो कितनी clear चल रही है task को लेके भी, और with her performance also. So just focus on voting for her every day for sure. And keep watching Battleground show. We need your support the most. Thank you so much. Thanks Thank a lot. you so much.